श्रीसूक्तमाहात्म्यं राम उवाच। एकं मन्त्रं समाचक्ष्वदेव लक्ष्मीविवर्धनं प्रतिवेदं जगन्नाथ यादवगणनृपात्मज। पुष्कर उवाच। श्रीसूक्तं प्रतिवेदं च ज्ञेयं लक्ष्मीविवर्धनम् अस्मिन् लोके परे वापि यथा कामं द्विजस्यतु। राम उवाच। प्रतिवेदं चमाचक्ष्व श्रीसूक्तं पुष्टिवर्धनं श्रीसूक्तस्य तथा कर्म सर्वधर्मभृतां वर। पुष्कर उवाच। हिरण्यवर्णां हरिणीं रुचः पञ्चदशद्विज श्रीसूक्तं कथितं पुण्यं ऋग्वेदे पुष्टिवर्धनं। ह्रते अक्षेषु वाजेति चतस्रस्तु तथा रुचः श्रीसूक्तं तु यजुर्वेदे कथितं पुष्टिवर्धनं। श्रायन्तीयं तथा सामवेदे प्रकीर्तितं श्रियं दातुर्मयी देहि प्रोक्तमाथर्वणे तथा। श्रीसूक्तं यो जपेद्भक्त्या तस्या लक्ष्मीर्विनश्यति जुहुयाद्यश्च धर्मज्ञ हविष्येण विशेषतः। श्रीसूक्तेन तु पद्मानां कृताक्तानां भृगूत्तम अयुतं होमयेद्यस्तु वह्नौ भक्तियुतो नरः। पद्महस्ता च सा देवी तं नरं तूपतिष्ठति दशायुतं तु पद्मानां जुहुयाद्यस्तथा जले नापैति तत्कुलाल्लक्ष्मीः विष्णोर्वक्षगता यथा। कृताक्तानां तु बिल्वानां हुत्वा रामायुतं तथा। बहुवित्तमवाप्नोति स यावन्मनसेच्छति बिल्वानां लक्ष्यहोमेन कुले लक्ष्मीमुपाश्नुते। पद्मानामत बिल्वानां कोटिहोमं समाचरेत् श्रद्दधानः समाप्नोति देवेन्द्रत्वमपि ध्रुवम्। सम्पूज्य देवीं वरदां यथावत् पद्मैश्शतैर्वा कुसुमैस्तथानैः क्षीरेण धूपैः परमान्नभक्षैः लक्ष्मीमवाप्नोति विधानतश्च। इति श्रीविष्णुधर्मोत्तरे द्वितीयखण्डे मार्कण्डेयवज्रसंवादे रामं प्रति पुष्करोपाख्याने श्रीसूक्तमाहात्म्यकथनं नाम 28-शतोत्तरशततमोऽध्यायः।